Welcome to What's Up with Vasant. The next guest on this show, Danish Husain, is an actor, poet, storyteller, thespian, and an institution in himself. A seasoned theatre veteran, Danish runs a theatre company called Hoshruba Repertory and has collaborated with the most sought after names on the Indian theatre scene. His film credits include Manto, Newton, Dhobhi Ghat, Peepli Live, among others. He has attained rave reviews for his exploits on OTT shows such as Taj Mahal 1989 and Bard of Blood. The following is part 1 of a 2-part interview series with part 2 to be released soon. Hope you enjoy it, and if you do, kindly like, share and subscribe to the channel. Welcome to the show, Mr. Danish Husain. Welcome to What's Up with Vasant. How is your lockdown coming along? भैया वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर योर वेलकम। हम तो यहाँ लॉकडाउन में फंसे हुए हैं मिशिगन में, और लॉकडाउन में तो आदमी जैसे कहते हैं आजकल कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है तो गुमनामी में चला जाएगा। हम जैसे आदमी तो जितने पर्दे पे दिखाई थे उतना ज्यादा अच्छा है। दिखाई नहीं दे रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है, तो हमें तो गुमनामी में जाना चाहिए। लेकिन ये लोगों की जर्रा नवाजी है, आप लोगों की इज्जत अफजाई है। थैंक यू। ढूंढ ढूंढ के स्निफ करके मुझे अपने बिल से बाहर निकाल लेते हैं। आई विल आस्क यू बिकॉज यू आर द मैन ऑफ एक्शन। आप सबका इंटरव्यू लेते जा रहे हैं और तरह तरह की बातें पूछ रहे हैं। हम तो भाई पुराने आदमी हैं। हम कुछ भी नहीं है सर, हम बस एक जरिया हैं आप जैसे लोगों को बाहर लेकर आने का। आपके बिल में से आपने जैसे कहा इस वक्त आप मिशिगन में अटके हुए हैं, तो मुझे लगा मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ये इंटरव्यू लूं। आप बहुत ही बड़े टैलेंट हैं, एंड आई थिंक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए इस वक्त आप जैसे टैलेंट की बहुत ज़रूरत है, और इसके बारे में बहुत बात करेंगे इन द कोर्स ऑफ दिस इंटरव्यू। सो सर, शुरू से शुरू करते हैं। और मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ इस बात से कि आप यूपी से हैं, और आई थिंक दैट यूपी के लोग कल्चरली बहुत रिच होते हैं। तो आप वहाँ की कुछ बातें हमें बता सकते हैं, वहाँ से शुरू करके कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? मैं उत्तर प्रदेश के एक जिले गाजीपुर से हूँ, जो बनारस के कुछ 70 किलोमीटर ईस्ट है। और भाई यूपी वालों का चक्कर क्या है कि एक तो जबान की चाशनी उनकी बहुत होती है। वो जो मुहावरतन जबान जो होती है ना, इडियोमेटिक लैंग्वेज, वो उसका खेल, उसमें कोई मुहावरा, कोई वर्ड प्ले करना, उस सब में जो है वो यूपी वाले बहुत तेज रहते हैं। खाने के बहुत शौकीन रहते हैं और पॉलिटिक्स में बहुत आगे रहते हैं। हर गांठ जो है, तो ये तो आप समझिए ये सब यूपी वालों को जो है ना बिल्कुल जेनेटिकली मिलता है। वो सब उनके डीएनए। हाँ, वो यूपी वाला जबान का तेज होगा, विटी होगा, कुछ मुहावरतन इडियोमेटिक जबान बोलेगा, और उसके अलावा जो है वो सांठ गांठ में बहुत लगा रहेगा। वो इधर का उधर देगा। राजनीति दिमाग, मतलब आप उसको कोई बात सीधी कहेंगे तो वो फेस वैल्यू पे नहीं लेगा, उसका पूरा एनालिसिस करेगा, सब टेक्स्ट समझेगा या नहीं ये कह रहे होंगे। तो ये यूपी वालों की खास आदत है। और हम मतलब मैं गाजीपुर से हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन जो हैं वो पढ़ाई खत्म करके जो है दिल्ली आ गए थे। अच्छा। तो both my parents were professors at Delhi University. तो फिर से हम दिल्ली चलते हैं। जब आपकी स्कूलिंग वहाँ हुई तो आप कौन से स्कूल में गए थे वहाँ? जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में होता है ना, हम हिंदुस्तान में हर आदमी उसकी एस्पिरेशनल लिविंग होती है। वो रहता है हिंदुस्तान, लेकिन उसकी एस्पिरेशनल लिविंग होती है कि मैं यूरोप में हूँ, मैं इंग्लैंड में हूँ। तो उस एस्पिरेशनल नाम का स्कूल था कैम्ब्रिज स्कूल। ओह अच्छा। कैम्ब्रिज से कोई लेना देना नहीं था। नाम बड़ा नाम था फैंसी। एक श्रीनिवासपुरी के में लाजपत नगर के पास। तो मैं उस स्कूल में कुछ 12 साल पढ़ा। बम्बई में जो मेरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसका नाम एग्जॉटिका। तो उसके अंदर हर बिल्डिंग जो है ना वो किसी इटालियन या स्पेनिश एरिया के हिसाब से है। सिसिली, वेरी इंटरेस्टिंग, वेलेंशिया, एंडलुसिया, तो सोरेंटो। तो किसी ने मुझसे पूछा कि ये आपकी बिल्डिंग में सब सारे नाम जो हैं इटालियन स्पेनिश के, मतलब मैंने कहा एस्पिरेशनल लिविंग है। अंग्रेज चले गए छोड़ के, लेकिन अभी भी हमारी ख्वाहिशें वही हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड की तरह से रहे। मैंने कहा अगर भाई इस बिल्डिंग का नाम सोन पड़ी और इस बिल्डिंग का नाम बुलबुल और इस बिल्डिंग का नाम कोयल रख दिया होता, तो अब यही है कि वो जो इसे सब कॉन्शियसली जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना कि कि भाई जो वो अंग्रेज जो चीज करते थे वो बेहतर होती थी, हम जो चीज करते वो खराब होती थी, बदतर होती थी। तो अब वही दिमाग है। तो
खैर anyway, that's besides the point. The point is कि तो यूपी वाली बात कर रहे थे आप, एंड आई नो दैट यू मे नॉट आइडेंटिफाई एज अ यूपीआईट इन द लिटरल सेंस, बिकॉज आपकी पैदाइश हालांकि यूपी में हुई, आप पले बड़े दिल्ली में थे, लेकिन जी यूपी वाले बच्चों में एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है उनकी भाषा को लेके, खास करके जी अंग्रेजी भाषा को लेके। तो आपने जैसे अभी बताया कि ये बिल्डिंग्स के आपने नाम लिए, तो ये कॉम्प्लेक्स से गुजरते हुए बच्चों के साथ ये हाउ डू दे डील विद इट? यू वुड नो योर कजिन्स growing up, you would have known people that you visited back in UP. no no How prominent is it today? the divide was within our family also, in the Acha. sense that there were cousins and there were people who were very well placed and who went to elite colleges and who spoke English like perfect English. Sure. And then there were a lot of cousins in the family who could not afford that kind of education and who went to government colleges or to poorer institutions. And again, this whole thing about English as a language and the ability to speak English correctly, Correct. yeah, this has been part of the aspirational middle class society of India for the longest time. तो अब वो क्या हुआ कि जो एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया और जो जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी हमारे मुल्क में है, ये सब देन है लोगों की, Right. एंड काइंड ऑफ सर्व देयर पर्पस at that time, the imperial civil services or the Sure. education system. They wanted to create an army of clerks and an army of जिसे कहते हैं Babus. babus, Yeah. who would for their system and who would further the imperial system. They were not really worried about कि ये हम खुद मुख्तार हो जाएं, सेल्फ रिलायंट हो जाएं. जी और जी. आदि आई तो बहुत सी चीजें बदली, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं बदली. And though some of the mindsets still carry till today. आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, एक तरह से अभी भी जो हुकूमत कर रहा है, जो ब्यूरोक्रेट होता है, जो नेता होता है, उसके अंदर एक तरह की तानाशाही है. जी. जैसे वो एक, जिसे कहते हैं ना, फ्यूडल मिजाज है. वो एक सेवा भाव बहुत कम लोगों में आपको मिलेगा कि भाई हम जनता के प्रतिनिधि, हमें जो है जनता की सेवा करनी चाहिए और हाँ. ये पब्लिक टैकर है, इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ये भाव आपको बहुत कम मिलेगा. जी. अभी भी आपको ज्यादातर भाव, अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जाएं, पुलिस में जाएं, या आप पॉलिटिकल लीडरशिप में जाएं, तो देयर इज अ सर्टेन स्टाइल ऑफ फ्यूडलिज्म अच्छा. कि आप फ्यूडल लॉर्ड हैं और अब आपकी बपौती है, आप बाहुबली हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे चलना चाहिए, जी. और किसी और का कोई राइट है या डेमोक्रेसी है, वो नहीं है. एंड हम्म. दिस गोज irrespective of any party or any leadership which is there in the country. Absolutely. तो Absolutely. आई थिंक ये, तो उसमें क्या हुआ कि एक एक से कहते हैं ना, एक माइंडसेट बन गया कि अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो हम पिछड़ जाएंगे, जी. एलीट नहीं बन पाएंगे, क्लास डिवाइड हो जाता है, एक हो क्लास जाए डिवीजन हो जाता बन पाएंगे. तो अब उसमें तो जितने भी मिडिल क्लास जो लोग थे, पेरेंट्स थे, और अच्छा हमारी फैमिली में क्या था कि हमारी फैमिली में ज्यादातर लोग एकेडमिक्स थे, है. जी. प्रोफेसर थे, पढ़ा रहे हैं, या कोई ब्यूरोक्रेट था, या कोई समझ लीजिए लॉयर था. तो इस तरह के बड़े वाइट कॉलर प्रोफेशंस होते हैं, ये ज्यादातर प्रोफेशंस हमारे यहाँ, हमारे खानदान में लोगों के पास होते थे. तो ज्यादातर जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड था, वो एक तरह से लैंडेड मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी जिसे कहते हैं. अच्छा. तो 91 में जब जमींदारी एबॉलिशन एक्ट हुआ, तो उसमें जमींदारी जो खत्म हुई और बहुत सारा जो लैंड था वो जमींदारों के हाथ से या लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के हाथ से निकला. तो families like us lost a lot of land. Sure. And because they were feudal in their setup, they were not used to any other kind of work. Sure. तो कुछ काम ही नहीं था. तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन थी मेरे फादर की, इन लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई करके नौकरी करना शुरू किया. सो देयर वाज ऑलवेज दिस सेंस ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी कि भाई अगर नौकरी मिलेगी ना, तो हम जो है बिल्कुल मुश्किल जिंदगी जिएंगे, जी. और नौकरी मिलेगी जब आपको अंग्रेजी आएगी अच्छी. करेक्ट. तो सारा जोर जो होता था वो अंग्रेजी सीखने पे होता था. तो मुझे याद है कि हम तो दिल्ली आ गए थे, तो अब जी. दिल्ली वाले तो कहते थे कि भाई ये तो दिल्ली वाले तो भाई एडवांस सिटी में रहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन है, इनकी जबान अच्छी है, इनकी पढ़ाई तालीम अच्छी है. तो जब मैं वापस जाया करता था यूपी में, कभी छुट्टियों में गर्मी की या मुहर्रम के जमाने में जब हम लोग मजलिस मातम में जाते थे, तो ये एक डिवाइड, क्लास डिवाइड दिखाई देता था. जो अपने यूपी में कजन्स होते थे जो पढ़ते थे, हम्म.
थे कि जिनको अंग्रेजी ज़बान पे कोई उबूर हो या जिनकी जो है वो भाषा अंग्रेजी अच्छी हो, वो ठीक है समझते थे, बोल लेते थे, लेकिन टूटी-फूटी मेन असल वो हिंदी में बड़े अच्छे होते थे। क्योंकि उर्दू ज़बान स्टेट नेग्लेक्ट करता था। तो राइट। और जो माँ-बाप बड़े कंसेंशियस होते थे या जो बच्चे कंसेंशियस होते थे, वो उर्दू ज़बान सीख लेते थे। वरना उर्दू ज़बान ज़्यादातर ओरल कल्चर की तरह से रह गई थी, कि अच्छा। बोलने में रहती थी लेकिन पढ़ने में अब ऐसा आज के दौर में और ये हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का एक नुकसान रहा है। खासकर आप जाइए श्योर। नॉर्दर्न इंडिया में देखिए कि पंजाबी कहते हैं, पंजाबी जो है गुरुमुखी आती नहीं है जी। लोगों को। जी। इवन बिलोंग टू अ पंजाबी हाउस कि अक्सर जो है लोग हिंदुस्तान में अगेन दिस इज अ क्लास थिंग। एक तो एक्सेंट के ऊपर लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं और दूसरा खराब या गलत अंग्रेजी बोलने पे अंग्रेज बहुत वाले मजाक, मजाक उड़ाते हैं जी। which is again it is again the same colonial mindset and same elitism which kind of looks down or condescends upon these things. अब एक फार ईस्ट का आदमी जब अंग्रेजी गलत बोलता है तो आप उसको माइंड नहीं करते हैं। जी। अफ्रीकन अगर अंग्रेजी सही नहीं बोल रहा है तो आप उसको यू डोंट कॉन्डरस्टैंड अपॉन दैट, यू गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट दैट दिस इज नॉट द करेक्ट। फर्स्ट this person and whatever effort that person is putting in to speak this language आप उसको appreciate करते हैं। राइट। लेकिन में अगर कोई गलत अंग्रेजी बोलता है तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं because it's a class thing. You suddenly see that this does not belong to the social elite that you prefer or want to identify with, and that becomes a process of othering the other person. गॉट इट। दूसरा यह है कि एक्सेंट का भाई एक्सेंट तो क्या है कि आप कहीं भी जाएंगे तो एक्सेंट आपको चढ़ जाएगा। जी। 3 दिन हैदराबाद में रहिए, आप हैदराबादी नक्को करने लग जाएंगे। I I want to ask you, since you mentioned and we talked a bit about Urdu, right? And Urdu is uh, I don't know this for a fact, but back in the day, I understand Urdu was not just spoken among the Muslims in the UP, that it was also spoken by Hindus. Would that be accurate, or was it just Absolutely, because Urdu, the language which we understand, has been the lingua franca of the country for the greater northern India country for at least 200 to 300 years. right? And the point is this, that the evolution of Urdu, as you understand today, what you see as Urdu language today, is not what it was 200 to 300 years back. You know, Right. what one needs to understand that formal languages come in much later than the original bolis and dialects. Hmm. Languages only evolve into formal languages with grammatical structures and grammar and grammatical rules much later. Sure. Earlier, languages are basically more dialect spoken languages, and Urdu and Hindi were overlapping a lot. True. So, so even again, what you understand as Hindi today is not really the language it was 200 to 300 years. तो उस वक्त जो है, इनफैक्ट हिंदी, what we understand Urdu today was called Hindi 200 to 300 years back. Acha. So the point is this, that there were basically a lot of overlapping. So there was Khadi Boli, there was Braj Bhasha, there was Bundeli, there was Bhojpuri, there was Awadhi, there was Mathili, and all these were dialects of Hindi and Urdu. Hmm. And then there was Rekhta, which was Urdu. Uh, and then there was Rekhti, which was also a form of Urdu, but when women would speak the language, it would be called Rekhti. Then there was Dakkani, which was a form of Urdu which was being spoken in Deccan. So, so there were all these variants of the languages happening. Got it. Now, the advantage of Urdu was that when Urdu started becoming a formal language, what it did was that it took from many languages. So it took from Persian, from Arabic, because Persian, right till the time of Aurangzeb, was the court language. Hmm. And proceedings used to happen in Persian. It's only Right. later, in Shah, that he made Urdu the court language, because Shah Alam himself was Shah Alam II, I think he himself was a great poet. So he made Urdu as the Mughal court language instead of Persian. Till that time, Persian was the court language. Got it. Uh, so, so what happened that Urdu, because it came late, it had the advantage of looking at every other language and picking from those languages. So Urdu is a great combination of, let's say, Khadi Boli, which you understand as Hindi today. It takes from Sanskrit, it takes from Persian, it takes from Arabic, it takes from Turkish. So it mixes all of these languages and it distills and it becomes like a potpourri of all these languages then spoken. Right. So
if you are speaking Urdu, and if somebody is a Persian speaker, or if somebody is a Turkish speaker, if somebody is a Arabic speaker, or somebody is a Hindi speaker, they Sure. would identify and see a lot of words there. They Hmm. will they will be able to read and recognize a lot of words there. And Okay. none of these influences. So what we need to understand is this: that society is never static. It's never stagnant. It's It's never evolving. it's always it's in a flux all the time. It is dynamic, it's always moving, it's a continuum. So it's foolhardy to believe that there was once a golden era, and there was once a very static kind of a culture which was complete in itself. It was never. Just the way our lives are now, our lives are always moving. Our Right. lives are there is always something or the other happening around us. If you look, and also we happen to be in a radical period where there has been rapid technological transformation in last 30, 40, 50 years. The way things have evolved, the way environment change has come in, the way fossil fuel has dipped in. So that has resulted in we being in a radically transformed era of humanity and civilization. So I have a question to ask you about what you're talking about. So you're Yeah. saying that society is never completely saturated in its art, for instance, for example, because it's going to be in a state of flux. So Yes. would it be accurate to say that the time that we're living in right now is creating art of its own, which we sometimes see in Bollywood and are condescending towards, and we label it as masala, we label really trashy songs or item songs that we don't find that the makers of the songs, for instance, have put in any effort. For example, I normally don't do this, a song like Tera Pyar Hukka Bar, or Hmm. the more recent, I don't know if you've heard it, but Slow Motion Mein, Hmm. No, something I haven't. something something slow motion mein. And is this going to be our legacy, and do you think that this is going to be considered rich in the future, because you're saying that society is in a state of flux? So is it how it's supposed to be now? So there are two things to what you are trying to say right now. When I made the point that society is always in a flux, I'm trying to tell people that there is no static once upon a time culture that we can refer to. It is always a continuum. It is always in a state of flux. Things are always dynamically interacting with each other and transforming each other. So same was happening with languages. And with the Khadi Boli and the spoken languages that were there in the northern India. This whole interaction with the Persian and Arabic and this culture that came in from the West, Yeah. from the Islamic West, resulted in this confluence, resulted in a kind of a new language coming up, which was Urdu, Right. and that became the lingua franca, the most officially used and spoken language of the country, right up till, let's say, the nationalist movement started, and the whole emphasis of Hindi being the language. And Gandhiji was at forefront of that movement, where he wanted Hindi to be the national language. And there is a very long, prolonged exchange between Gandhi and Tagore, where Tagore is insisting that Hindi cannot be the Hmm. national. There are a lot of people in this country who do not have Hindi as their mother tongue and will not with Hindi, and thus we should retain English in our political discourse as a language. And there is a very lengthy exchange, sometime around 1912 and 1913, I think, happening between Hmm. he and Rabindranath Tagore. So till that time, a lot of language, a lot of publication which was happening in 19th century, when the initial press came in, and press in Punjab, press in Delhi, Lucknow, Deccan, they were printing a lot of material in Urdu. Nawal Kishore Press, which is the iconic press which was in Lucknow in the 19th century, was publishing almost everything in Urdu, Hmm. besides also them in Hindi. Hmm. So there was a lot of Urdu influence in our Hindi cinema. If you look at our cinema in Sure. 19, Yeah, we've like, always romanticized um, life through Urdu. most of your great lyricists, right up to 1980s and 90s, were great Urdu poets. Whether it's Sahir Ludhianvi or Majrur Sultanpuri or Kaifi Azmi, or Makhdoom or Majaz or Humar Barabankvi or Rajinder Singh Bedi. So most of the great lyricists of the Indian Hindi film industry were great Urdu poets in their own right Right. up to 1980s and 90s. Most of the screenplay writers, Dr. Rai Masoom Raza, like, stands out, were great Hindi and Urdu literature.
So the choice of words that these people were using, the idiomatic language that they were using, was in a lot of way was Urdu cinema and not really Hindi cinema, that you understand. So that kept the language alive in the oral context. And then I remember in 1980s, suddenly when cassette recorders became very Yeah. famous, cassette records started becoming like a much sought after property. The whole ghazal culture came in, and you had people like Jagjit Singh and Mehdi Hasan and Hmm. and Pankaj Udas and Anup Jalota. They're all singing ghazal, and they're all singing Urdu ghazals, and suddenly everybody is familiar with Qatil Shifai and other Urdu poets, contemporary poets of that time, and Ahmad Faraz, and you are hearing poetry of these great poets there, and it's becoming popular. Right. So, in some sense, the language has there always been in the consciousness. Now, coming back to the second part of the question that you said, that these are the two songs recently that kind of stand out, and is this going to be our legacy? Again, what we need to understand, it's very difficult to judge your legacy or your contemporary legacy when you are alive and when you are in that period, because this is a kind of a wisdom which can only come in hindsight, 30 Mm. years down the line, 50 years down the line. Today we can turn back and say, okay, 1980s was a trashy Hindi movies came out, but 1980s was also the time when the parallel art cinema was happening and was creating some gems of Indian cinema. Sure. Uh, we can look back at 1990s now, and we can say that, okay, with 1991 liberalization and with the policies that Manmohan Singh came with, and Right. especially the open satellite television, a whole new world of television industry opened up, which also impacted filmmaking, Yes. because there was a whole huge audience which was now watching television and was not so much watching cinema, Mm. because it became alive at home, and it was providing so much content to people, much in a way how we have a parallel in OTT and Netflix and Amazon Now, Prime, yeah. people things doing vis-a-vis theater, that that you have too much content there. Similarly, when the multiplex came in, it also again revolutionized how film industry and how cinema consumption was to happen instead of single screen theater. So a lot of concept of what legacy can do is something that only we can understand in hindsight. uh, but to say again, there is no one monolithic culture. It's not that there's only one kind of cinema being made, or there's only one kind of narrative being given, or there is only one kind of cultural representation happening in our popular cinema. तो जिस Mm. जैसे लोग मुख्तलिफ हैं अलग अलग तरह के, वैसे ही काम भी मुख्तलिफ होता है अलग अलग तरह लेकिन दानिश का। साहब, मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूँ, कि what we are lapping up today in the name of content, I mean popular cinema. I'm not talking about the OTT platforms, which I think have been a boon for us. I'm talking about the largely popular massy masala movies that have been created in the name of content or entertainment. Surely you would agree that that is not the best that we could have come up with in terms of our artistic sensibilities. When we have the likes of you, when we have the likes of the Amir Khans, and we have the likes of the Anurag Kashyaps and Vishal Bharadwajes and so on and so forth, then why is it that the masses are still lapping up what would be largely considered by some as being not the best that we could come up with? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसका जवाब है, इसका कोई ऐसा सिंपल जवाब नहीं है वसंत, की मैं आपको यूं कहूं कि इसका भाई ये तरीका है। देखिए क्या है ना कि हर आदमी जो है वो किसी सर्कमस्टांशियल उसके अंदर कोई चीज क्रिएट कर रहा होता है, उसकी अपनी एक पर्सनल जद्दोजहद होती है, उसकी फिर एक इंडस्ट्री का एक एनवायरनमेंट होता है, उसके ऊपर एक सामाजिक एनवायरनमेंट है, एक देश का एनवायरनमेंट है, उसके अलावा एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उसके अलावा पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। So there are various factors which are at play at any point of time. G. When somebody is creating something, all these factors, your personal circumstances, the industry circumstances, the atmosphere that you are living in the country, the technological changes, all these host of factors are at work when somebody is trying to create something. अब उसमें क्या है कि आदमी जो है अपने डिसीजंस, अपनी चॉइसेस मेक करता है, तो किसी को लगता है कि भाई मार्केट में चलने वाली चीज ये है, अगर हम ये चीज बनाएंगे तो ये बिल्कुल टॉप जाएगी और हमारा जो है इन्वेस्टमेंट जो है पूरा निकल आएगा।
तो वो एक फॉर्मूला के हिसाब से चलता है कि भाई चलो एक लीड हीरो ये रख लो, एक ये एक्ट्रेस रख लो, ये एक आइटम नंबर डालो, ये एक इसमें फाइट सीन डालो, ऐसा थोड़ा यू नो जो सिनेमेटोग्राफी हो थोड़ा उसके अंदर थोड़ा कुछ आप उसके अंदर कुछ तिगड़म ऐसा लगाएं। वो अब किसी ने ये कॉन्शियस चॉइस की, उसी जगह भाई किसी और ने कॉन्शियस चॉइस की है अब कि भाई जैसे अनुभव सिन्हा पिक्चरें बना रहे हैं, अब जी। उन्होंने पिछली पिक्चरें बनाई, मुल्क है, आर्टिकल 15, 15, हाँ। थप्पड़। तीनों बड़ी शानदार फिल्में हैं। या साहब ने जो अडेप्टेशंस किए शेक्सपियर के, कमाल जी, के अडेप्टेशन मकबूल हैदर। या। कारा से तक। तो या सुधीर मिश्रा साहब जो है जो जिस तरह का काम कर रहे हैं, तो आई एम सेइंग दैट ये तो आपकी चॉइस है कि आप अब उसमें इसी में ये एब्सोल्युटली। डायरेक्टर जैसे अमित मसूरकर के साथ मैंने काम किया, उन्होंने न्यूटन फिल्म बनाई, तो जी। अब वो अलग हट की फिल्म है, कमाल का सटायर है। जब अमित ने मुझे फोन किया कि वो चाहते थे कि मैं एक छोटा सा कैमियो करूं उसमें, एंड आई unfortunately I was not much aware of Amit Masudkar. I knew that he had made some offbeat indie film called Suleimani Kida, but I was not aware as to what his work is. And so I said, यार वो आप जरा मुझे स्क्रिप्ट भेज दे, मैं पढ़ना चाहता हूँ. And he mailed me the script, and I read the script, and I said, wow, who is making a film like this in our country? या। You know, on political process of voting in our country. So I was like completely bowled over by the script, and I immediately called up and I said, yes, I'm doing this film. You know, even though it's a cameo, it's a small role, but I'm all for it. And I'm so glad I did Newton. When it came out, it was there for everyone to see, and या। it, one of the finer films that have come out in our recent times. Similar, like Nandita Das, she made Manto, and I remember she called me up and she said, "There's a very, very small, tiny role, but you know, I want you to play it because it requires a certain gravitas, and I think you know you would be able to bring it off." And I said, "Fine, yes." And later, when I see the film, it is such a delight to be part of such a great ensemble cast. जी। जी। Or Manto's life. You know, Manto was a great poet. We all have been inspired by him in some way or the other. So I'm saying कि जो हमको जब भी हम कोई किसी जमाने की या किसी ट्रेंड की बात करते हैं, हमको जी। उसको नहीं देखना चाहिए, हम्म। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ चॉइसेस अपनी डिसाइड करते हैं, एंड देन दीज चॉइसेस थ्रो अप अ लॉट ऑफ स्टफ एट अस. तो हो सकता है मेजॉरिटी लोग चॉइस अपनी सेफ, दे वांट टू प्ले सेफ, सो दे वांट टू गो बाय द फॉर्मूला एंड दे वांट टू क्रिएट व्हाट यू अंडरस्टैंड एज मेन स्ट्रीम सिनेमा. उसी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उन चॉइसेस के खिलाफ कुछ नया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो जी। थोड़ा हट के अलग के. तो ये एक जद्दोजहद है, ये चलती रहेगी, तरह तरह के लोग तरह तरह की चीजें बनाते रहेंगे, और ये हमें अगेन हाइंडसाइट में समझ में आएगा कि हमने अपनी लेगेसी क्या छोड़ी है, क्या हमने एक ऐसा दौर छोड़ा है. अभी तो फिलहाल हमारी लेगेसी बहुत खराबी लेगेसी लग रही है, जी। क्योंकि जिस तरह का माहौल मुल्क में है और जिस पॉलिटिकल। हाँ। कोर्स हमारे मुल्क में है, तो इन सम सेंस माय जनरेशन हैज फेल्ड because that was not what was handed over to my generation by our parents, जी। and in some sense my generation has failed and has been complicit in bringing in this kind of an atmosphere in our country. So I think we can only safely say this much later as to how good or how bad we were. ओके। That's very well said, sir. So I'm going to go back to influences that helped shape you and made you the great man that you've now become. Let's go to the ghazals, the storytelling, the poetry. How did it all start, and where must one start? Well, I mean, as I say, there is no one particular starting point, and these things they just simmer and they just keep happening. And over a period of time, you realize, okay, now I'm tanned. You know, जैसे it's not like कि आप बीच पे पहुंचे और फलाने उस बजे इतने सेकंड पे मैं टैन हुआ. You know, आप पहुंचे और आप वहां पड़े हुए हैं और सडनली 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद आपको समझ में आया कि मैं तो जी। टैन. जी। तो ये चीजें ऐसे ही धीरे धीरे चढ़ती हैं आदमी के ऊपर, इन्फ्लुएंसेस और ये सब. ये अ, अ, मेरा कोई ऐसा कोई कभी इरादा नहीं था जब मैं छोटा था या टीनेज में था, इवन इन माय यूथ, आई वुड बिकम एन एक्टर और आई वुड बिकम अ स्टोरी टेलर. जैसे कि मैंने आज ही सुबह एक इंटरव्यू में इंस्टा पे मैंने कहा कि भाई हम तो भेड़ चाल चलते थे.
हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, माँ-बाप टीचर थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मशक्कत करके एक ऐसे स्कूल में डाल दिया जहाँ अंग्रेजी माध्यम था, मीडियम का। तो हम तो भेड़-चाल चल रहे थे जैसे ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं दिल्ली की, कि साहब आप तनख्वाह के ऊपर जीते हैं जी। और जीते हैं कि तनख्वाह जो है उसमें गुज़ारा चल जाए और उम्मीद ये कि कुछ कल नया हो जाए जिससे कि हम ज़्यादा पैसे हमारे जी। पास आ जाएँ। तो हम भी उसी तरह तनख्वाह और उम्मीद पे जीते थे और बिल्कुल जिसे कहते हैं गधे थे, मीडियम थे, 35 की क्लास में 17वीं पोज़ीशन आती थी। ना नीचे थे, ना ऊपर थे, है ना? जी। बिल्कुल तो ये हमारा हाल था और कोई ऐसा टैलेंट भी नहीं था। वो भी कुछ लोग होते हैं कि भई स्पोर्ट्स में बड़े अच्छे होते हैं या कुछ मौसीकी में अच्छे हैं, कुछ सितार बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं जी। या पेंटिंग करते हैं, स्कल्पचर अच्छे हैं, हाथ एम्बिडेक्स्ट्रस हैं, उनके हाथ जो हैं काफ़ी कुछ करते हैं। तो हमारा कोई ऐसा पर्टिकुलर टैलेंट भी नहीं था। तो हुँ। अब ये बड़ी मुश्किल से 12वीं पास हुई, सिर्फ वो सिफ़ारिश करके कॉलेज में एडमिशन कराया गया। वो भी रो-धो के किसी तरह इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, फिर एग्ज़ाम दे दिया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, तो उसमें नाम आ गया तो एमए कर लिया। तो वो उसके बाद अब सर भेड़ चाल। कैसे लाजवाब तरीके से डाउन प्ले कर रहे हैं आप। आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है। हाँ, एम आई राइट? अरे भाई तुमको पता नहीं कैसे-कैसे गधे-गधे लोग अरे सर कहाँ-कहाँ। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? तो उसके बाद अब दुनिया भेड़-चाल थी, तय कर आप दिया। सर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आप पीएचडी के लिए भी आप क्वालिफाई हुए थे? हाँ, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट वर्जीनिया में, तो मैंने मैंने अपने वालिद साहब के सामने जाके हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा डैडी 4 बड़ी मुश्किल से एमए पास हुआ है, अब मैं 4 साल अमेरिका में जाके किसी ठंडी जगह पे वो सब्जेक्ट जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट है वो नहीं है, वो मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। And I think that was a wise decision because if I would have had come to America to do my PhD, I would have been a mediocre student. मैंने बड़ी मुश्किल से PhD पास की होती और आज मैं किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ा रहा होता, वो भी धक्के खा के, मेहनत खा के। तो I think it is what I wanted to do. I was not sure, but I was very sure about what I don't want. And हुँ। I think ये बहुत ये क्लैरिटी होना लाइफ में बहुत जरूरी है कि आप क्या नहीं नहीं करना चाहते ताकि आप वो चीज़ें ढूँढ सकते हो जो आप शायद कर सकते हो, कर मेबी। सके क्योंकि फंसे नहीं, क्योंकि वो फिर एक बार आप फंस गए ना तो वो जिंदगी जो पापी पेट है ना, वो भैया उसका जो पहिया चलता है ना, वो आपको फंसा देता है। वो बिल्कुल चक्की है आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको जी। साहब खाना चाहिए ही चाहिए, आपको सर पे छत चाहिए ही चाहिए, आपको एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड चाहिए रहने का, उसके लिए फिर आपको पैसा कमाने की उसमें आप फँस जाते हैं चक्की में और फिर आप जो है बाकी कुछ करना चाहते हैं, वो आपके हाथ से निकलता जाएगा जैसे-जैसे आपकी उम्र जाएगी। तो ये मुझे समझ में आ गया था कि भई मुझे ये नहीं करना है, तो मैंने कहा भई मैं ये नहीं करना चाहता और वालिद साहब भी जिसे कहते हैं पुत्र मुँह में आ गए होंगे, ये लड़का दूर पुत्र। है और उन्होंने कहा ठीक है कुछ यहीं पे एमबीए कर लो, नौकरी कर लो, तो हमने फिर एफएमएस से एमबीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से और फिर वो बैंक में नौकरी करना शुरू किया। तो अब बैंक में नौकरी करते-करते तो शुरू में सर तो एक बड़ा अच्छा। सेकंड एक सेकंड हमारी ऑडियंसेस के लिए एफएमएस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स फॉर बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज इन द कंट्री। वुड आई बी राइट और वुड आई बी रॉन्ग सर? ऐसा कहते हैं लोग। तो अब वो कि तो शुरू में तो भाई बड़ा अच्छा लगता था भाई, आदमी गाड़ी में बैठ के जा रहा है, सूट-वूट टाई पहन के कनॉट जी। प्लेस में किसी ग्लिट्जी सी बिल्डिंग में, आप ऊपर 15वीं फ्लोर पे आपका ऑफिस है, यूँ ऐसा पूरा कनॉट सर्कस आपको दिखाई देता है। तो ये सब शुरू-शुरू में कब बड़ा की अच्छा बात लगता। है सर, कब की बात है ये? दिस इज़ 1997 सो यू हैड नाइन जस्ट फिनिश्ड कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ और आपने 12th खत्म किया एंड देन यू वेंट हियर? हाँ, ये मास्टर्स खत्म कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद ये शुरू किया। तो ये सब छोटे-मोटे कुछ काम किए थे मैंने। अच्छा। लेकिन ये बाकायदा मुलाज़मत जिसे कहते हैं, एक प्रोफ़ेशनल एक करियर, एक आपकी एक नौकरी-पेशा आदमी है, आप जाते हैं, सुबह दफ्तर जाते हैं, शाम में जी। जाते हैं। स्टार्टेड अराउंड दैट टाइम, आई मस्ट हैव बीन 26, 27 एट दैट टाइम। मैंने जब मुलाज़मत करना शुरू किया। तो लेकिन थोड़ी दिनों के बाद कुछ 1 डेढ़ साल में मुझे ये समझ में आने लग गया कि I am not enjoying this. I'm not cut out for that. And हुँ। a reason for that was the corporate culture that we had. हुँ, हुँ। The corporate culture was a culture of sycophancy. मतलब वहाँ इतना मेरिट और टैलेंट नहीं होता था जितना कि आप साहब बॉस की चाट रहे हैं, आप जी। जितना ब्राउन ठोक, नोजिंग। जी, जी। हाँ, उतना सलाम ठोक रहे हैं उतना।
that was very disheartening for me because I जी, was not those things. I came from a certain kind of a academic and literary background where people had a lot of pride in what they did, and नाक बड़ी ऊंची होती थी हमारे खानदान में लोगों की, और हर आदमी पढ़ा लिखा होता था, कोई शायर है, कोई अदीब है, जबान के ऊपर एक लताफत होती थी जबान में जब बात करते थे, और जानकारी ज्ञानी इतने लोग होते थे मेरे घर खानदान में। तो हम भी जरा वो एक उस एक प्राइड के साथ बड़े हुए थे कि भाई हम जरा अदब कल्चर से आते हैं, तो हमारे लिए ये जरा झुक के सलाम करना, जी हजूरी करना जो था ना, वो बड़ा मुश्किल काम था। जी, तो समझ में आने लगा कि ये तो गाड़ी चलने वाली नहीं है कि हम जो किसी और का जूता उठा के अपने सर पे रखें और जी हजूरी कान ठोकते रहें। तो ये से तो निकलना पड़ेगा, लेकिन अब करें क्या? जी, कुछ नहीं था। और उसके अलावा शुरू के दौर में जो है वो इतना जी हजूरी और कॉर्पोरेट कल्चर नहीं था। शुरू के दौर में थोड़ा ये था कि भाई हम भी सुपरमैन बने, रात में चड्डी जो है पैंट के ऊपर पहन के उड़े हैं, दिन में तो हम बोरिंग से वो क्या केंट क्लार्क हैं, लेकिन रात में हम बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हो जाते हैं। तो अब जैसे होता है लड़कों का, भाई अब इस दिन में तो मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन रात में मैं जी। स्टैंड अप रॉक बैंड में हूँ, कुछ मैं तो फला अलग, कुछ तो हट के करें, हाँ। मतलब आदमी, तो जब पब में बार में बैठे हैं तो 2-3 खवातीन अगर अगल-बगल आ जाएँ तो उनको आप एक इंटरेस्टिंग क्या आदमी बात लगें, है! बोरिंग ना लगें। जी, तो बिल्कुल। हमने कहा, कोई टैलेंट आता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था क्या करना है। तो ये समझ में आया कि जब कॉलेज में थे तो प्रोफेसर्स की मिमिक्री करते थे, और उसके लिए बड़ा हिट वो हम हमारा हिट नंबर होता था। मतलब जब हम जाके तो जनता पागल हँस-हँस के। तो अच्छा, ये समझ कि वो बड़ा एन्जॉय करता था मैं। तो मुझे लगा कि भाई ये शायद एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। अच्छा। तो अब क्या था कि भई आपने एक्टिंग नहीं की है तो आप कम से कम फ़ॉलो करते हैं, आप नाटक देखते हैं, आप देखते हैं कौन क्या अच्छा थिएटर डायरेक्टर है, तो हम कुछ फ़ॉलो भी नहीं करते थे। जी, तो उस ज़माने शाहरुख खान और मनोज बाजपेयी बहुत फ़ेमस हो गए थे। तो अच्छा। ये वक़्त में खान साहब जो हैं वो उनके उस्ताद हैं, उन्होंने उनको पढ़ाया है, उनको थिएटर सिखाया है, बैरी और जॉन, दो सॉरी मैंने सुना नहीं ढंग से। बैरी जॉन की बात कर यस। रहे हैं आप? जी। तो बैरी जॉन वैसे खुद तो अंग्रेज हैं, लेकिन वो लेट 60s में अर्ली 70s में हिंदुस्तान आए थिएटर पढ़ने के लिए, वो और फिर वो यहीं रह गए इसी मुल्क में, और यहीं के बाशिंदे हो गए। तो बैरी साहब जो हैं वो मैंने उनका नंबर फ़ोन वोन निकाल के उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने, वो ज़रा आसान ज़माना था, लोग खुद फ़ोन उठा लेते थे। तो अच्छा। उन्होंने पूछा, भाई तुमने कुछ किया है थिएटर? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा तुम्हें 3 महीना कोर्स करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी मैं तो नौकरी करता हूँ। तो कहने जी। लगे पार्ट शाम में 6 से 8, हफ्ते में 3 बार। मैंने कहा कर लूँगा जी। तो मैं वो बैंक से भागता था, नोएडा में उनका वर्कशॉप होती थी। कनॉट प्लेस से मैं अपना गाड़ी लेके, फिएट गाड़ी होती थी पुरानी प्रीमियर पद्मिनी, अच्छा। और किसी तरह बड़ी मुश्किल से हाँफते-काँपते क्लास में पहुँचता था मैं। तो वो 3 महीना कोर्स किया मैंने, उसके बाद मैंने कहा जी अब? तो कहने लगे जाओ ऑडिशन दो, रोल लो। मैंने कहा जी मुझे तो आपके साथ काम करना है। तो कहने लगे वेट करो। और उसी के 2 महीने बाद उन्होंने अनाउंस किया, उनका उस टाइम एक थिएटर एक्शन ग्रुप टैग उनका ग्रुप होता था। अच्छा। तो टैग किया कि भई वो विजय तेंदुलकर साहब का मशहूर नाटक जो है शांतता कोर्ट चालुश है, खामोश अदालत जारी है। वो हुँ, हुँ। उसको उसका मंचन करेंगे। तो मैंने ऑडिशन किया, उसमें पोंछे एक बहुत अहम कैरेक्टर है, तो मुझे पोंछे का रोल मिला। और वो मई 1999 में, अभी मई 2020 चल रहा है, तो अच्छा, 21 साल मैं पहली बार मंच पे एक एक्टर की तरह उतरा। तो ये जो है अच्छा। सफ़र, आप समझिए कुछ इस तरह से शुरू हुआ। तो कैसा था वो एक्सपीरियंस जब आप पहली बार स्टेज पे गए? हाउ डिड इट फील टू फाइनली हैव एट लीस्ट मेड इट इन द सेंस दैट यू हैड नाउ लेफ्ट दैट करियर ऑफ बैंकिंग बिहाइंड Well, प्रोफेशनली? it was not over then. I was still working in banks. अच्छा, I continued working till 2002. अच्छा, अच्छा, So 3 year overlap. So it was not an overnight decision कि भाई चलो आज मैं एक्टर बन जाता हूँ. So for three अच्छा, years I continued doing theater, and I continued acting, and I continued working in the bank. और तो ये जो चीज़ हुई, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अक्सर जो है ये कभी जब मैं मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू ले रहे होते हैं और ये सवाल आ जाता है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि अरे आपने जो है उस उम्र में 31-32 साल की उम्र में आपने बैंक की नौकरी छोड़ के आप एक्टर बन गए, तो बड़ा ब्रेव डिसीजन था, बड़ा करेजियस हुआ होगा ये वो। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखिए, ब्रेवरी, करेजियस ना, ये सब लेवल्स हैं जो हम अपने आप को बाद में देते हैं। हाँ,
ज्यादातर आदमी अपनी सिचुएशन में जब कोई डिसीजन लेता है तो मजबूरी के तहत ही लेता है, जी, because he's like pushed against the wall when he's forced. So most of the time people don't take decisions because it's an act of bravery. yeah, Most of the time it is the only choice that they have. They don't right, have an option. तो मैंने कहा भाई मेरे साथ भी ये था कि मैं बहुत पक गया था उस जी हुजूरी से, उस साइकोफेंट कॉर्पोरेट कल्चर से, और वो ऐसा काम करने में जिसमें मेरी कोई दिलचस्पी या रुचि नहीं रह गई थी। अच्छा, तो मैं उस दुनिया से तंग आ गया था, और हुँ, मुझे यहाँ मजा आ रहा है थिएटर में, तो मुझे यही करना चाहिए। और उसकी वजह ये थी कि जब मैं मंच पे पहली बारी उतरा, तो जिस तरह से लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस को सराहा और जिस तरह से लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, तो पहली बार जिंदगी में कुछ 29-30 साल की उम्र हो गई, तब जाके किसी ने मेरी पीठ थपथपाई कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। आज राइट, तक उससे कभी स्पॉटलाइट में आया ही नहीं था। तो राइट, मैं राइट, होकर एक एवरेज मैन, somebody standing on the fringe, somebody always watching the show from the sidelines, उस किस्म का आदमी था। तो जी, जब मुझे I had no sense that I can excel at anything. I thought I would always be a crowd. I would always be somebody sitting on the fringe. And when I acted on stage, that was the first time when I was appreciated. When people came back to me, and a lot of people thought that I was some veteran actor, thespian, thespian type, yeah, to believe that I was acting for the first time on stage. So it was essentially the power of appreciation. हुँ, कि जब लोगों ने थपथपाई ना, तो हमको लगा कि अरे साला यही काम है सही, यही हम कर सकते हैं ठीक से। तो जी, वो जो है वो चीज रीइंफोर्स होती गई over a period of 2-3 years while I was working on the bank. When every time I would step on stage, I would do something, there people would see something in me, they would see a spark in me, they would see something in me, and they would say कि हाँ नहीं चलिए आप, why don't you come and act with me also, why don't you come and do this play with me. जी, Rapidly in 2-3 years time I started acting with lots of people in Delhi theater circuit, and I started getting work. There was a lot of appreciation happening. I was enjoying it. Suddenly there was a circuit I knew outside office and outside my school friends and college friends right, and outside these circles, and there was a wider set of people. I remember I was working. I was still in the bank, and one day this was the first time when somebody publicly acknowledged me for my जो उतना अब तो खैर काफी होता है कि अरे सर sure, yeah, yeah, selfie, आपके वो पहली बार था, and I think it was 2001 or something, जी, and I used to work in Standard Chartered Bank, Connaught Place में ब्रांच होती थी। तो मैं अपने डेस्क पे बैठा हुआ था, एक साहब आए, बैंक में कस्टमर आए, और वो मेरे किसी कोलीग को ढूंढ रहे थे। तो he came and he said, I'm looking for Mr. Joshi. तो मैंने कहा भाई वो तो कहीं गए हैं बाहर मीटिंग के लिए, आप मुझे बताइए, जी, how can I help? So, this very formal kind of transactional conversation is going on, and suddenly this gentleman says, wait a minute, are you that actor from that play that I saw this month? मैं तो अरे सर आपने क्या काम किया था, wow, you were so good in that play. And that was the first time when somebody has actually recognized me for my acting prowess. sure, And that was a great boost, that yeah, whole somebody runs into you in a crowd, in a non performative space, and right, recognize your work. So तो वो appreciation जो मिला, तो उससे थोड़ी एक हिम्मत बंधी कि हाँ जी, शायद जी, अच्छी कर सकता हूँ, जो बेहतर कर सकता हूँ. And जी, then in two I resigned from the bank to become an actor. And when I resigned to become an actor, I was my purpose was not really what I should say. My purpose was not really to become a full-time like film actor or something. sure, sure, मैं अपना थिएटर करूंगा, कुछ अपनी एक मेरी थिएटर कंपनी होगी, और मैं अपना उस थिएटर जो है उस नाटक वाटक करके पूरी दुनिया में घूमूंगा, और इसी तरह से मैं कुछ अपना जरिए माश ढूंढूंगा। तो दैट वाज द आइडिया, बट देन स्लोली one thing led to another, and right, then right. I was doing The rest film. is history. Yeah. So then, when you decided to become an actor full time, uh, I, I've seen a lot of interviews of actors say that we don't consider the phase that followed a struggle because it's a journey. It's a part of our journey to become something that we wanted to. We chose a certain path, right? It's not a circumstance as opposed to a choice. So was it the same for you that when you chose to do this, you were okay with the struggle if it was a struggle for you, or that journey that it would take a certain amount of time, which you had no idea of how long it would take? अब देखिए,
हाइंडसाइट में तो आदमी उसको रोमांटिसाइज कर सकता है, उसको बहुत सी चीजें कह सकता है, कोई जर्नी कह सकता है, कोई स्ट्रगल कह सकता है। बहुत से लोग एंग्स्ट के साथ जीते हैं, वो वहां नहीं पहुंच पाते जहां उनको पहुंचना चाहिए था, और उनके अंदर एक बिटरनेस आ जाती है। जी बहुत से जी लोग a goal late in their lives and then they become star. We've seen that with Irfan, we've seen that with जी Nawaz, with Manoj, or with Pankaj Tripathi now, or Jaideep Alawat or Neeraj Kavi. All these जी guys been hanging around for long, and now much later in their career they are breaking forth. And so, in hindsight, we can look at this journey in whichever way. But मैं अपने तजर्बे से आपको ये बताता हूँ कि बहुत सी चीजें आपके दिमाग में होती हैं कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, और हम्म बहुत सी चीजें आपके तजर्बे में नहीं आती हैं, अच्छा जिनका आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, कोई उम्मीद नहीं होती है। And it is somewhere a confluence of these things. हम्म Somewhere your will that this is how I want my life and my career to go, and somewhere it is the external influence which is happening around you, which is changing your decisions, making you improvise, making you go certain paths in your life which you didn't expect, and it takes you somewhere जी else. So, and I think the same thing happened with me. I mean, when I decided in 2002 to resign from the bank and become an actor, I could not have conceived this journey for myself. श्योर This it is a unique path that led me to where I am today, and what has become of me. And it is highly debatable. How do you look at this journey? हम्म Somebody say that no, maybe I did not succeed as much as I should have. I have not become a marquee name in that sense. On the other hand, somebody might think that I have a very, very rich journey, and that makes me stand out vis-a-vis my other contemporary actors. I'm not just seen as I'm not just one trick pony who can just act in cinema, but was also seen as a man who can do a lot of stuff. श्योर So I think ये तो वही है कि एक सफर है। आप जा रहे हैं और उसमें आपके साथ चीजें होती जाती हैं, कुछ चीजें क्योंकि आपने इरादा किया उस सफर पे जाने का, तो जी इसलिए आप उस हैं। जी लेकिन और भी चीजें आ रही हैं जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जी तो अब जैसे एक बहुत बड़ी चीज मेरी जिंदगी में हुई, वो थी द स्टोरी टेलिंग, जी Dastangoi. And again, I had no idea. I was just doing regular theater, and I was teaching part time at some management and fashion institutes to kind of make up for the loss of income which I श्योर had by resigning the bank job. And then one day the storytelling happened. It just dropped in my lap, and then I was doing storytelling. And when I started doing storytelling, I had no idea that this would become such a big thing. But then, over a period of time, within 6 months, 8 months, 1 year, we started realizing that this is like something big we have राइट cracked. And and suddenly we became like a marquee name in the world of performing arts. हम्म And everybody became aware of us, not just श्योर I being just any other struggling theater actor. I became someone more known with an identity, with a face, and with something to show, and it made a lot of things easier for me in certain sense, because somehow it also intimidated people that, oh, he is who can do that art form. He can perform for countless hours on stage, speaking such highfalutin, archaic Urdu language and Persian या language. He can remember so much text, and he can perform it like this. So it kind of gave me a reputation, and that reputation mostly preceded me wherever I went. So whenever it wasn't hard for me vis-a-vis other actors to introduce myself. The श्योर moment I would go somewhere, or I would speak to somebody, and whoever had seen my performance anyway, for them it wasn't really it was not difficult at all. But whoever has not, most of the time people would have heard about me. They knew. I was just wondering that were there times that you felt this sense of it being that long journey, or there was bitterness in you if you had the kind of goals that a lot of other actors have, which is to get into commercial cinema, to make money, to get famous, or to whatever, because you were essentially a theater artist, which is a very very pure sort of humble um, life that comes with being one, I would imagine. Did you ever feel that sense of bitterness that it's taking too long, or what should I do now? Bitterness. It was more a disruption happening in my life, and suddenly there was a big falling out happening and a huge scandalous case happening, and then
I had to stop doing Dastangoi, and also I had to shift base to Bombay. Okay. So it was more a disruption that took place in my life. And literally in mid 40s, when people are already, they are established and they're stars, I again decided to pack everything and move and shift base. And came from Delhi, I came to Bombay, and I again had to reestablish myself because Mm-hmm. uh, the thing is this, that most most A-listers knew who I was. So the big directors and the big writers and the big actors, they all knew who I. But then the process of filmmaking is such that it's really happening at a different level. It doesn't happen there most of the time. Most of the time, it's the casting directors and people who are working at the intermediary level who kind of Sure. determine. Sure. And that set of people were not so much aware of me. Mm. Uh, but I wouldn't say it was a problem because uh, I didn't go around, knocking at every door that, hey, I'm in Bombay now, and now you should look at me as an actor. Yeah. What I did was that I focused on theater when I came to Bombay, and I said I will continue doing theater, Mm-hmm. and I did. I kept working on my theater. I started acting and writing and producing and directing plays there. Um, and meanwhile, there would always be someone who would know about me and who would come and would Okay. say, please to act in my film. And I would say, yes, sure, why not? And Mm-hmm. then first two years, I would say 2014, 15, 16 was when cinema work wasn't that much coming, but there was sporadic cinema work happening. Something or the other would Sure. come in terms of writing or in terms of acting. Meanwhile, I continued doing my theater. And then post 2017, Mm-hmm. things becoming more regular, more as more and more people started seeing my work and started Right. realizing Right. my work, as I started getting more offers. And by 2018, 2019, it became more like an oiled machinery. You finish one project and there is something else coming up for you. Yeah. And now this lockdown break has come. Yeah. If the lockdown would not have happened, I would have been back in April in India, and I was Sure. supposed to be shooting for another Netflix film. Meanwhile, there are a whole series of projects which I have already shot and canned, which would come up. I mean, some of them came just before the lockdown happened. We had Right. uh, Taj Mahal 1989 and Gay Ballet, Suni Tapurwala's film releasing. Yeah, so I would say that I've been lucky in some sense. Mm-hmm. I would say that I've not been bitter. Mm-hmm. Yes, I've been abundant. Yes, I've had the very painful period to go through. But those painful periods were not painful because of work. They were more Okay. for the legacy that I had, the loss of relationships that I had, the loss of being a migrant or a refugee in your own country, where you have to leave your place of work, which is Delhi, and your Mm-hmm. home, and then to Bombay. So there were other kind of ordeals that were happening. Sure. But I think I'm never bitter in my life. I'm still not bitter in my life, and there are a few things that possibly help me because of my temperament. I'm never in the rat race. I don't see it as a race. I don't feel I don't get pangs of jealousy if I see my peer actors getting more work, because a lot of peer actors are very good actors and they are my friends and they deserve the work that they are getting, and Right. they're not actors. And I have a certain faith in myself that Sure. I bring in a certain sincerity in my work. And at some point of time, as I tell younger actors when they talk to me, that it's not about your talent. Most of the time it's about you capturing the imagination of the writers, the directors, and the producers. They Yeah. need to see you as that actor who can fit in those booths that they are writing, and that Sure. takes time. It doesn't mean Irfan didn't have talent or Nawaz didn't have talent, Sure. uh, Sure. that they were struggling, or Manoj Bajpayee didn't have talent. But it just takes time. You just have to consistently do your work Mm. and be it. And at some point of time, your work would start speaking for itself, and you would start getting more work. You would start capturing people's imagination. So I always have that faith in me, Right. and I still believe. And I just hope before all my beard goes white and all my hair go white, I get lots of work to kind of do for this age before I Yeah. start doing old man.
No, I think there's a lot of work coming your way. You're a phenomenal actor, sir.